Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 8 April 2021 and I am teaching you chapter number 1, and name of the chapter is Things Around Us. So let's do little recapitulation, student. First, what we have done in our previous video. So in the previous video, student, we discussed that there are many things present in our surroundings. Is it clear? There are many things which are present in our surrounding. So we divided that things into two categories, or you can say in two groups, that is living and non-living things. Is it clear? And now we divide it into two categories, that is living things, another is non-living another is non-living things. So when we are talking about living things, then what come under this living things? Plants, animals, and human beings. Okay, so in living things means we are talking about the plants, animals and human beings. And non-living things, what come under this category? Non-living things: natural, non-living things. Another is man-made non-living things. Is it clear? So things around us, there are many things present in our surrounding. So it is divided into two categories, that is living things and non-living things. So in non-living thing, what comes? Plants, animals, human beings. And non-living things, natural non-living things and man-made non-living things. Is it clear? Now when we are talking about the natural non-living things, this one, natural non-living things. So what are the natural non-living things? Here, water, sunlight, air, mountains, cloud, etc. All these come in natural non-living things. And what are the man-made things? Man-made things like car, table, chair, bus, fan, etc.
So these are natural non-living things: water, sunlight, air, mountains, clouds, etc. Man-made non-living things: car, table, chair, bus, fan, etc. Now I hope you are able to make a difference between a living and non-living things. Now student, let discuss the characteristics of living things. One by one. ठीक है? Characteristics of living things. First is living things. Living things need food. Okay, this is the first characteristics of a living thing, that living things need food. So see student, all living things need food to live. Without food life is possible? So answer is no, because we eat food because food provide us energy to the body and it helps it to grow. We need food because food gives us energy to perform different activities in our day-to-day life, and due to food there is a growth also in our body, and due to food our body is fit and healthy. ठीक है, our body is fit and healthy due to the food. Is it clear? Our body is fit and healthy due to the food. Now when we are talking about the living things, then plants are the only producers. Plants are what? Plants are producers. They can prepare their own food, and human beings and animals are consumer. Human beings and animals, these are known as consumers. The reason is that we depend directly or indirectly on plants for our food. Is it clear? Because plant can only prepare their own food, they are known as producer. So plant prepare their food in the presence of sunlight, water, carbon dioxide, and this process is known as photosynthesis. The process by which plant prepare their own food in the presence of a sunlight, water and carbon dioxide, that is known as photosynthesis. And sunlight is absorbed by a green pigment. This pigment is present in the leaves of the plant, and this is known as chlorophyll. This green pigment is known as chlorophyll. Okay, so that is the reason living thing need food. This is one of the characteristic of a living thing. A living thing की एक characteristic हो गई कि living things need food. On the other hand side, you take an example of a table, chair. Now first characteristic of a living thing is that living things need food. Now I have written two names on the board, that is table and chair. Is table need
food. Is table or chair need food? Then if someone asks you, table and chair both are non-living things, they need food. So answer is no. So the first characteristics of a living thing is that living things need food. So what is the characteristic of non-living thing? Non-living things do not need food. Is it clear? So for non-living things, non-living things. So characteristic of a living thing is that living things need food. So what is the characteristic of non-living things? Non-living things, non-living things do not need food. So the first characteristics of a living thing is that living things need food and non-living things do not need food. So this is the first difference between a living and non-living things. Second point is all living things breathe. क्योंकि all living things breathe, and the gas which is our living gas, that is oxygen, and this gas we are getting from the plants. This gas we are getting from the plants. So all living things breathe. Human beings breathe through the lungs, because they take oxygen from the nose and then it goes into the lungs. So organ which is responsible for breath in human being is the lungs. When we are talking about the fish, then it is gills, Gills, gills. Is it clear? And when we are talking about insects like cockroach, insects like cockroaches, and flies. So how they breathe? They breathe through the hole present on the surface of their body, and this is known as spicules. Spiracles, spicules. Is it clear? So through how human beings breathe, how cockroach and flies breathe, they breathe through the holes which are present on the surface on their body, and this is known as spicules. Is it clear? Then after that, now how plants breathe? Plants, how they breathe? They breathe through stomata. These are the tiny pores which are present on the surface of the leaf.
These are the tiny pores which are present in the leaves, and through this there is a exchange of gases take place. Is it clear? So even student, living things are also depend on each other. For example, when I talk about living things, then it is divided into three categories: plants, human being, and animals. So see, living things also depend on each other. How we are getting our living gas, oxygen, from the plants. So human beings and animal get oxygen from plants, get oxygen from plants. In the same manner, so student, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स की बात करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर द फूड आल्सो एंड फॉर देयर लिविंग गैस ऑक्सीजन आल्सो. इन द सेम मैनर plants are also depend on human beings and animal, because the gas which they need, that is carbon dioxide, carbon dioxide, the gas which they need, that is carbon dioxide, and they are getting this carbon dioxide from human beings and animals. Is it clear? They are getting this carbon dioxide from human beings and animals. Okay, now next, now the second point, this is also the characteristics of a living thing. Is it clear? All living things breathe. Now in the case of non living things, so the answer is non-living things do not breathe. So all living things breathe. And what is the characteristics of a non-living things? Non-living things do not breathe. For example, chair. So chair breathe. So answer is no. Is it clear? Next, living things grow and living things. Next point is, third point is living things grow. So लिविंग थिंग्स में क्या होता है बेटा? ग्रोथ होती है. ठीक है, लिविंग थिंग्स ग्रो. आप वंस अपॉन ए टाइम, एट द टाइम ऑफ ए बर्थ यू आर अ स्मॉल बेबी. आफ्टर दैट आपकी और ग्रोथ हुई. वंस अपॉन ए टाइम इट विल कम दैट यू बिकम एडल्ट, एंड आफ्टर some time you become old also, and once upon a time will come that you will die also. ये क्या लाइफ साइकिल है हमारी. ठीक है, एक समय होगा जब आपकी बर्थ हुई होगी, बेबी हो गया, स्मॉल बेबी, उसके बाद आपकी एज और बढ़ी. ठीक है, सो एंड आफ्टर दैट यू बिकम अ एडल्ट,
बड़े हो गए अपने पेरेंट्स की तरह। वंस अपॉन ए टाइम विल कम दैट यू बिकम ओल्ड एंड वंस अपॉन ए टाइम कम दैट यू डाई। सो दिस इज अ, और सबकी अपनी अपनी लाइफ साइकिल होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, सबकी अपनी अपनी लाइफ साइकिल होती है। ठीक है। सो इन दिस मैनर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो भी जिसकी भी बर्थ हुई है वो डाई भी करेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है किसी की बर्थ हो गई तो वो कभी डाई नहीं करेगा। ठीक है। तो जिसकी भी बर्थ होगी लिविंग स्विंग में, वंस अपॉन ए टाइम आफ्टर बिकमिंग ओल्ड ही विल डाई। क्लियर। तो लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं। ठीक है। इसके अलग अलग एग्जाम्पल हैं, आप इसमें देख सकते हो। काऊ, अब इसका काऊ के बच्चे को क्या बोलते हैं? काल्फ। ठीक है। जैसे डॉग, सो किड हम लोग क्या कहते हैं? डॉग। ठीक है। स्मॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? पपी। इज इट क्लियर? इन द सेम मैनर दिस इज काउ। बेबी ऑफ द काउ इज नोन एज काल्फ। इज इट क्लियर? ठीक है। सो बेबी ऑफ डॉग इज नोन एज पपी, बेबी ऑफ काउ इज नोन एज काल्फ। इन द सेम मैनर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आते हैं। ठीक है। क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं। तो प्लांट्स आल्सो कम आउट फ्रॉम ए सीड। ठीक है। तो सीड में से पहले व्हेन द सीड ओपनिंग, तो स्मॉल सैपलिंग कम आउट। After some time it will become a plant. After some time it will become a plant. या तो ये प्लांट बन जाएगा या तो ये बिग ट्री बन जाएगा। Is it clear? So living things grow. Living things grow. For example, a seed, from this seed new sapling come. After that, after some time it become a plant, or after some time it become a big tree, or after some time it become a big tree. तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल सीड वाला, सीड से लिया। ठीक है। सीड सैपलिंग का हो गया, प्लांट हो गया, ट्री हो गया। ठीक है। और एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज दिस? दिस इज, इसे मान लिया बर्ड है। ठीक है। आफ्टर सम टाइम दिस बर्ड विल बिकम, दिस बर्ड विल बिकम फ्लावर। तो देखो ग्रोथ हो रही है ना। लिविंग थिंग्स क्या है? ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर से ले लेते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो। टेक एग्जाम्पल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। At the time of birth, it is known as baby. After some time, it again grow, and once upon a time will come, it become adult, and after some time, it become old and it will die. So, some more example: baby of the dog is known as puppy. Baby of a cow is known as calf. Plant is also a living thing. For example, this is a seed. From these seed, new saplings come out. ठीक है। आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम इट मे बी इट बिकम ए प्लांट और मे बी इट बिकम अ बिग ट्री। फॉर एग्जाम्पल टेक एग्जाम्पल, दिस इज बर्ड, मीन्स होती है कली। नाउ इन सेकेंड पिक्चर, आफ्टर सम टाइम इट बिकम फ्लावर। सो सबकी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? इसको हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे टेक ए बर्थ एंड वंस अपॉन ए टाइम विल कम व्हेन दे डाई आल्सो। जितने भी हैं दे डाई आल्सो। सो अब हम लोग बात करें नॉन लिविंग थिंग्स। तो थर्ड पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग इज लिविंग थिंग्स ग्रो। ये हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स do not grow,
जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अगर आपसे कोई पूछे नॉन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ होती है तो आंसर होगा नो। जैसे आपके घर में कोई फैन है, ठीक है, आपके घर में मान लो ये फैन है, तो क्या आपने डेली देखा है इस फैन की ग्रोथ होती है? इस फैन की ग्रोथ होगी, क्या आपने ये चीज ऑब्जर्व की है? तो आंसर क्या होगा? नो। सो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं बेटा, उनकी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। सो लिविंग थिंग्स ग्रो, मैंने विद एग्जांपल आपको सब बता दिया। फर्स्ट एग्जांपल ह्यूमन बींग्स का लिया, छोटे बच्चे को बेबी बोलते हैं, आफ्टर सम टाइम थोड़ी और ग्रोथ होगी, वंस अपॉन ए टाइम कम इट बिकम एडल्ट एंड आफ्टर सम टाइम it will become old and die. In the same manner, these are examples of some animals also. The baby of the dog is known as puppy and the baby of the cow is known as calf. Then I take example of a plant, seed, from this seed sapling comes, from the sapling maybe after some time maybe it become a small plant or it become a big tree. क्योंकि जब प्लांट्स की क्लासिफिकेशन क्लास 3rd में पढ़ाई थी तो मैंने 5 पार्ट्स में पढ़ाई थी। हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, क्रीपर्स, क्लिम्बर्स एंड ट्री, ठीक है। तो इस पे अब ये बर्ड है एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम अ फ्लावर। सो ये हो गया लिविंग थिंग्स ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। Now see, all living things you want to note down, you can note down in your copy also. All living things, all living things grow and change. Grow and change. What does it mean? It means that living things live for a certain period of time, grow old and die. Is it clear? All living things, जितने भी living things हैं, all living things grow and change. Grow and change means जैसे आप बेबी हो गए, फिर आपकी ग्रोथ हुई, आप मैन हो गए, अडल्ट हो गए, फिर आफ्टर सम टाइम आप ओल्ड हो गए, चेंजेस आ रही है ना आप में, और वंस अपॉन ए टाइम कम दैट यू विल डाई आल्सो. सो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज. That living things live for certain period of time, grow old and die. सबकी ग्रोथ होती है, फिर सब एडल्ट भी होंगे और आफ्टर दैट ओल्ड हो जाएंगे एंड देन दे डाई आल्सो. सो दिस थिंग इज इन लिविंग थिंग. सो ये हो गया बेटा लिविंग थिंग्स ग्रो, ठीक है.
और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स को आप 1 मंथ और 1 ईयर बाद भी ऑब्जर्व करोगे तो उनमें ग्रोथ नहीं होती है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. थैंक यू.